So let's begin our lecture of diabetes. First of all, what is diabetes? Diabetes is a chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. इसका मतलब क्या, मैं साथ साथ आपको उर्दू में भी साथ में ट्रांसलेट करके दूंगा और बेसिक्स बिल्कुल बेसिस के ऊपर जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली इसका समझ आ सके, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है कभी बिल्कुल हाउस ऑफिसर्स कुछ होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, कुछ ट्रेनीज होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के भी होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम लोग बेसिस से पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि जितना इजीली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा समझा जाएगा। सो जैसे कि आपको बताया है कि डायबिटीज इज अ chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. तो इसका मतलब ये है कि एक chronic disease है जिसमें आपके पास जो इंसुलिन है उसकी या तो डेफिशिएंसी हो रही है, जो पेनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, या तो पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही कि वो इफेक्टिवली टिश्यूज के ऊपर एक्ट कर सके और बॉडी की नीड्स को मीट कर सके, और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हो रही है। अगर लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली रेज्ड लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अब वो कट ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है कि इस वैल्यू से ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट की अगर ज़्यादा आएगी तो उसको हम लेबल करेंगे कि डायबिटिक है, किस लेवल के ऊपर प्री डायबिटिक होगा और किस लेवल पे नॉर्मल होगा, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। So before starting the diabetes, we will see a video of what is diabetes and the different types of diabetes. उसके बाद फिर हम types of diabetes के बारे में पढ़ते हैं। There are two main types of diabetes, type 1 and type 2. They're different conditions, but they're both serious. There are some other rarer types of diabetes too. What all types of diabetes have in common is that they cause people to have too much glucose in their blood. But we all need some glucose. It's what gives us our energy. We get glucose when our bodies break down the carbohydrates that we eat or drink, and that glucose is released into our blood. We also need a hormone called insulin. It's made by our pancreas, and it's insulin that allows the glucose in our blood to enter our cells and fuel our bodies. If you don't have diabetes, your pancreas senses when glucose has entered your bloodstream and releases the right amount of insulin so the glucose can get into your cells. But if you have diabetes, this system doesn't work. When you've got type 1 diabetes, you can't make any insulin at all. If you've got type 2 diabetes, it's a bit different. The insulin you make either can't work effectively or you can't produce enough of it. In both types of diabetes, because glucose can't get into your cells, it begins to build up in your blood. And too much glucose in your blood causes a lot of different problems. To begin with, it leads to diabetes symptoms like having to wee a lot, being incredibly thirsty, and feeling very tired. You may also lose weight, get infections like thrush, or suffer from slow healing wounds. Over a long period of time, high glucose levels in your blood can seriously damage your heart, your eyes, your feet, and your kidneys. These are known as the complications of diabetes. But with the right treatment and care, people can live a healthy life. And there's much less risk that someone will experience these complications. If you've got diabetes, you can find lots of information and